Hi there, welcome back to the channel. Let's be honest, thousands of profile go for the same role as you have applied, and there's a good possibility that your profile gets rejected without even being looked at. Now, how do you circumvent this? How do you ensure that your profile gets looked at and stands a better chance of getting shortlisted? Based on our experience of interviewing candidates for the last 25 years, I want to share with you our observations. And we see a good profile, and when we are interested and keen on meeting somebody based on their profile document. Now, first and foremost, the profiles we have seen carry very generic statements. I am a team player, I am an enthusiastic person, I am a fast learner. And over a period of time, after looking for so many profiles, these words have lost value for us. What we look for is a person who is talking facts and telling rather than generic statements. He's talking about his achievements. He's talking about the value that he brings onto the table. He's focusing, instead of saying that he's a good team player, he's talking about he has led teams, he has launched new teams, he has set up new teams, and he has led his team to achieve certain goals. If you're in sales and marketing, rather than telling you're a good go-getter, you should be talking about what has been your achievement in the last job that you have done in sales. Or if you are in implementation side, rather than talking about led a project team for implementation of X project, you should be specifying that I've led a team of 10 programmers and I have implemented this within this much time, which has led to savings of X percentage for the company. That is something which attracts attention of a panelist or a recruiter, and he is keen to see more in detail about this profile. Profile pictures are again a big problem. I have seen profile pictures where people are wearing t-shirts or they are holidaying and they have put a picture in their profile when they are sending it for an application. Strictly no, please avoid doing that. Either you put a professional photograph which looks very professional, where you are dressed formally and you are posing for a photograph for this purpose. If you do not have, please do not put any photograph. But if you're putting it, please ensure it's a proper cover photo which is looking very professional, because the profile is a document which is going to leave an impact about you in the person's mind, whoever is looking at or reviewing the profile. So it is a pitch. Even before you go for an interview and talk about yourself, they are actually evaluating you based on the profile. So make it a good profile. Talk about your achievements. Don't talk about subjective statements. State numbers wherever possible, and try to talk about your ROI and not just good skill sets, right? Now, if the job is specified a skill set in which you need to be an expert or you need to have some experience, and if you have that experience, please elaborate on it a little bit, talking about why your profile is suitable. So you need to put a note towards the end of all the profile facts that you have stated, that I feel I'm more suitable for this role because you are looking for so skill, and I have done in my previous jobs these things and achieved so many things. So humanize it. It shouldn't look that you have just gone to a tool, resume making tool, and stated some facts and put up a profile. It should look that you're putting in effort to make the profile, right? Now, one important tip which we wanted to give you in this video is, there is competition. There is the threat of AI that everybody is worried about, that AI is going to take away our jobs, which might be true to us an extent, but I want you to think about how you can use AI wherever you can in your professional lives to be more productive, to be more efficient in your work. And starting with making your profile. Now what happens, you have made a profile which you are sending it for all kinds of job applications which you are interested in. I want you to relook at that approach of yours and use AI there. How do you do it? If you're applying for a role, let's say you're applying for a marketing role in a company, and that
company is looking for certain skill sets in marketing. Marketing is a huge area. Now, there are so many activities a person does in marketing, but this company is looking for a person who has more experience in certain areas of marketing, okay, which you do not know. So when you see marketing, though you have read it, you say that, okay, I am qualified in marketing, I have experience in marketing, so let me just share my profile. And the problem is, the moment your profile reaches, because there are thousands of profiles which have come as a response, problem number one, your profile could be rejected straight away because you've generically stated you're a marketing person. Point two, possibility two, that your profile gets shortlisted, though you have not specified in detail what they're looking for, but since you're qualified in marketing, your profile is shortlisted, but it ranks very low. So as a result, again, there's a good possibility that you may not be called for interview, or you might get rejected there itself. Now, simple solution that we are offering to you, which we want you to try: take the job description of the position you are interested in, take your profile, upload both of them in ChatGPT, ask ChatGPT to remake your profile document based on the job description attached. Now, why is this important? For two reasons. One is, if the company's recruiter is going to look at your profile, he's going to look at the keywords that you have mentioned in the job description, which are matching to your profile, are highlighted in your profile by ChatGPT. And the recruiter feels that, okay, this is a candidate we should meet. Possibility two, that the company has an ATS. And ATS is a system which is an applicant tracking system which most of the companies use these days. When profiles go in bulk, the ATS just looks at 4 or 5 key criteria that they're looking at and matches whether it is available in the profile or not. Profiles which have those keywords are shortlisted and given a score. Profiles which do not have these keywords are straight away rejected. So if you use ChatGPT, when ChatGPT looks at a job description, it understands that these are the keywords the company is looking for in a candidate. These are the key skill sets and experience areas. And it tries to build your profile to highlight those areas. As a result, your profile will get a good score, or it is likely to get shortlisted. So try doing this and see if it works for you. Congratulations. You got the interview invite, which means your profile got shortlisted. Now, going for a first interview will feel like you're walking into a lion's den. The difference here is the lion is wearing a tie and holding your profile in his hand and asking you questions. Welcome to Pep Talks. My name is Shashikant, and I'm going to prepare you for this scenario in today's video. I'm going to talk about 6 pointers which you can make a note of. And towards the end of the video, I'm going to give you a tip on how you can use AI in managing the interview process. So let's start now. Before you start thinking what you're going to wear for the interview day or what you're going to speak in the interview, I want you to Google the company like you would do research on the girl whom you have crush or the boy whom you have crush on by checking on what they are up to in Instagram or Facebook. I want you to do that with the company also. Please do research, check what they are in news for, what are the latest developments in the company, so that you are well informed and you can handle interview questions better. On the day of the interview, if you're given a time of 10 o'clock and related to back to the days when you went on the first date, if you were to go on a date and you agreed at a 10 o'clock time, I'm sure you would have reached there by 9:30. Now, I don't want you to go 9:30 here, but I want you to be there at least by 9:45. And the reason is that sometimes the interview room or the interview block is a little away from the security or reception. And it takes about 10-15 minutes for a person to clear the process because early morning, everybody's coming to office and the security team is busy. And you shouldn't become late because of that. So the 10 minutes buffer time is for you to clear all this process.
and be in front of the interview room at 9:55. 9:55 is okay. 10:01 is not acceptable. Okay, so do that, follow this. And once you're planning what to wear for interview, please keep these things in mind. For guys, the dress code is simple. If the role requires you to wear a blazer and a tie, please do that. Otherwise, plain light colored shirt with dark trousers, a belt, and leather shoes. Don't wear check shirts, don't wear t-shirts, no sport shoes, no sandals. Okay. For ladies, you can wear western outfit, salwar kameez or sari. One common thing for both is please don't wear any strong perfume or have any strong odor which can irritate the panel members. For guys and girls, if you're a smoker, please don't enter the interview room with stink of a cigarette. Okay, that can be a put off for the panel members. Now, having entered the interview room, please greet all the interview panel members and based on the time zone. So if you're going in the morning, because I told 10 o'clock, it's good morning. If you're talking to somebody virtually on a virtual interview, talk to them and greet to them in their time zone. So though it might be 10 o'clock for you, it might be afternoon or evening for them. So greet them accordingly. Now, once you're asked to take a seat, please sit. Your posture should be very straight up, but it should not look like you're there for an interview of a bodyguard. Maintain eye contact, but it should not be a stare where you're trying to give a feeling, I know your dark secrets. No, that's not what the look should be. It should be a normal connect, eye to eye connect. Please wear a smile on your face, not the kind of smile which is like somebody is forcing you to be a part of the family photograph and you're forcing a smile. Have a smile on your face and then start interacting with the panel members. All throughout the interview process, pace out your speech. Don't be in a hurry to talk. When they ask you to tell about yourself, please understand this is not an invitation for you to start from your childhood and make a whole documentary of an hour. No. Please ensure that this is like a Netflix series trailer, which is short, crisp, and to the point. You talk career highlights related to this job. That's it. Okay? Little bit about yourself and your hobbies is good, but don't go on elaborate in terms of who your uncles are, who your brother is working for, all those in detail unless until they ask you for it. And if any question comes where you don't have an answer, please be honest and tell, I don't know about it. Please understand that the panel members have interviewed almost about 100, 200 candidates before you, if not more than that. And they can sense things when somebody is trying to make up something. For you, this is the first interview. So don't try to go on a trip where you want to give an impression that I know everything. If you don't know something, you don't know something. As simple as that. Do that. Some questions that are going to come in interview, and especially if you're a fresher or a young professional, these might come as bouncers for you because you think there's a standard answer for it, but there's no standard answer. And hence, I think it is very important for you to know what to answer. For instance, somebody will ask you, tell me something about a challenging situation that you had come across and how you handled it. Now, when somebody is asking that, if you're a working professional, you will talk to them in relation to your work life. If not, if you're a fresher, then you'll talk to them about your college or about your life till now, what you have lived. I want you to follow STAR methodology. Now, what does STAR methodology mean? That means you talk about the situation. What was the situation which you find challenging? What was the task that was needed to be done in that situation? What was the action you had taken and what was the result of it? Keep it crisp and talk so that you don't have to elaborate too much on it, but at the same time, you're conveying what was the challenge, what was needed to be done, and what you had done. As simple as that. Some panelists are going to ask you, and in most of the interviews, they ask this question, tell me about your weakness or what are your weaknesses. Now, very important for you to understand why are they asking you this question.
They have two things in mind when they are asking you this question. One is, how much is your self awareness? Are you aware, or did you anytime self introspect to understand what is your good things and what are your bad things to be worked on? Second thing, they also want to know if there are some weaknesses in you which can become a problem tomorrow for the organization or in you performing the duties. So that's the purpose. Now, everybody has weaknesses. The tendency of everybody is that somebody asks you to talk good about yourself, strengths, we can go on talking for hours. But the moment somebody tells us to tell something about which is not good in us or weakness, we shy away. General response is, no, I don't have any weakness. Need not necessarily. If you have a weakness, please talk about it. Also tell them what are you doing to do to overcome it. Or if you're already doing something to overcome it, please mention that also. Okay. It's not wrong or bad to have weaknesses until unless you have a major weakness that can hinder your job performance, then it's a different chapter altogether. Panelists might ask you also that where do you see yourself 5 years from now? Now, there is no standard answer for this, but I have always got a standard response whenever I've asked a candidate this question. And the prompt answer was that I want to be a manager in this company. Need not necessarily be. If you have done research about the company, if you know about their hierarchy, you know in 5 years what is possible, what is not possible. Plus, it is also possible that you have your own plans. After doing work here for some time or after working here for some time, you might be wanting to go for higher studies or you might be wanting to start something of your own. Please talk about that. You need not tell a standard template answer, right? Talk what is relevant to you, what you feel, and what your plans are. Lastly, one question that might come to you is, why should you be considered for this role? Now, here also you need to put yourself in the interview panel shoes. They are asking you because of two reasons. One is they want to see how good you are at pitching yourself. Secondly, what is the factor that is going to differentiate you from the other finalists that they are going to interview? So keep these two in mind. If you're a fresher, you can talk about your interest in the role, what you have done research, you want to make a career in this line, talk about that. If you're a working professional, please talk about why this company's role is a better option than your previous company. Please don't talk ill or bad about your previous company, whatever is the reason. You should always talk positive that, okay, I feel here I have a better chance of growing, I have better chance of learning, whatever facts brought you to apply for this interview. Having done all this, very important for you to clarify all your doubts before leaving the interview room. For two reasons. One is, once you have clarified all your doubts and queries, you are well prepared to take a decision if the result were to be positive. Secondly, this also gives a panel an impression that you're serious and you are going to take this opportunity very seriously if it is offered to you, right? After doing that, once you leave, please ensure that you send out a thank you note by mail. A short and crisp mail thanking them for their time. If you have the mail ID that was given to you. Now, the tip that I wanted to give you, which I told you about at the beginning of the video, is there are a lot of tools available on the net, which actually give you an option of having a mock interview. So there's a position for which you want to get interviewed. You talk about that position and they throw questions, relevant questions to you. In fact, some sites offer you an option of recording the video also so that you can check your body language, how your response was. So please do that. Otherwise, we have tested all the AI tools. We have tested ChatGPT, we have tested Perplexity, Copilot, and Gemini. And among all these, we felt Gemini was the more relevant. And we felt more confident and comfortable using Gemini for asking it to give us a list of 10 questions, which can possibly come for this JD. And we also uploaded the profile and said, what should be my response to this questions? And it gave you the right answer also based on your profile. Now you can further elaborate. So the 10 questions, if you're happy with it, you can make it 20, 30 also, and it will keep doing it.
what would be the right response to it. And if the response that you had in mind should be altered, then it will help you in doing that. So please try doing that, because preparation is the key here. If you're prepared, you will handle the interview better. Lastly, the result will be out of the interview. So two options again. You get selected. If you get selected, congratulations and all the best for your role. If you don't get selected, please note that outcome of a job interview is not a reflection of your capability. Does not mean that you are bad or you have failed. No, you have not failed. In a simple scenario, 15 people have come for the final round of interview for one position. Only one had to get selected. And you would have missed by a narrow whisker, because on that particular day, the other person was more confident or he had more relevant experience. So don't bother about it. Think back if there was something you could have done better in the interview. Prepare for it. Prepare for your next interview and go ahead. We're going to come with a lot of videos on such topics. So subscribe to our channel so that you get notified for all such future videos that we upload. Thank you and all the best. Hi there, welcome back. If you think your first job is going to be easy, glamorous, and full of achievements, I have news for you. Your first job is going to test your patience, test your skills, and work ethic like nothing else. But here's the thing, if you handle it well, you will set yourself up nicely for your whole career. But lastly, I think in the tips that I want to tell you is, positive attitude is what is expected by the company. They always expect a person who comes with a lot of positive energy, who is always wanting to see how things can be done with others. फ्रेशर्स, आपके लिए नई खबर, कॉलेज के टाइम पे लेट जाना और किसी और का असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट कर देना और जैसे तैसे पास हो जाना चल जाता था। लेकिन अगर आप अपनी पहली नौकरी में लेट जाते हो और किसी और का काम कॉपी करके सबमिट करते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और आपका एचआर आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में। वो हर छोटी चीज़ जो आपको पहले ही दिन से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उन चीज़ों के बारे में, और जो कोई भी कॉलेज में आपको नहीं सिखाते हैं, लेकिन जो आपका पहला बॉस रहेगा वो पहले ही दिन से हर चीज़ पे नज़र रखेगा। वेलकम टू पेप टॉक्स। मेरा नाम है शशिकांत। इस चैनल पे हम कोई थ्योरी की बात नहीं करते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो आपको करियर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की वो टिप्स जो हर फ्रेशर को जाननी चाहिए और पहले 6 महीने नौकरी के बहुत रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप 6 महीने में, पहले 6 महीने आपकी नौकरी के, या तो आप स्टैंड आउट करोगे या आप फ्रेशर बन के रह जाओगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्टैंड आउट करें। तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला टिप, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑफिस 10 बजे है और आप पहुंच जाते हो 9:59 को और आपको लगता है आप टाइम पे आ गए हो। पंक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने समय का और दूसरों के समय का रिस्पेक्ट करते हो। और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपने डेस्क को क्लीन रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और उनको निभाएं। मेरे करियर में मैंने कई ऐसे किस्से देखे हैं कि जहाँ जो भी मैनेजर और टीम लीडर है वो हमेशा उस टीम मेंबर पे ज़्यादा भरोसा करता था जो हर दिन टाइम पे आता था। भले वो टॉपर ना रहा हो, भले वो काम में एकदम एक्सीलेंट ना रहे, लेकिन उनको लगता था कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम पे आते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये याद रखिए कि आप जब जाते हो ऑफिस, आपको ये नहीं करना है कि आप धीरे धीरे खिसक के जा रहे हो और अपने शू लेस बांधने का बहाना करके आप डेस्क पे बैठे हो और जो एचआर की सीआईडी वाली नज़रें हैं
वो आपको ढूंढ रही है। आपको इतना टाइम मिलना चाहिए कि आप ऑफिस जाएं, आराम से चाय लेके बैठें और इस हद तक करें कि आप पूरे दिन की जो तैयारी है वो ऑफिस के टाइम से पहले आपने कर दी हो, ताकि आप ऑफिस का टाइम शुरू होते होते आपके पास पूरी लिस्ट है जो आज आप डील करने वाले हो, जिस काम को आज आप टैकल करने वाले हो। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कम्युनिकेशन। तो पहला था पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि आजकल जब आप कॉलेज में बात करते हो किसी से भी, तो आपको लगता है कि आप किसी को भी बोल दो हे ब्रो व्हाट्सअप, चल जाता है। बट प्लीज़ याद रखिए कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे व्हाट्सएप यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं होती है। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आप उसका मेल पे ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते कि हे ब्रो प्लीज़ लुक एट द फाइल एंड गिव मी फीडबैक, थैंक्स THX। ऐसे नहीं चलेगा। आपको बाकायदा तरीके से लिखना पड़ेगा कि हाय सुरेश राजेश, जो भी आपके टीम लीडर का नाम है, प्लीज़ फाइंड अटैच फाइल फॉर योर रिव्यू, प्लीज़ गिव मी फीडबैक बाय EOD, थैंक यू, दैट्स। और कम्युनिकेशन में ये भी नहीं कि आपने इतनी बड़ी समरी लिख दी कि ऐसे राइटिंग आप अपनी इंग्लिश दिखाना चाह रहे हो कि प्रोजेक्ट से ज़्यादा बड़ी तो आपकी मेल हो गई, क्योंकि कोई भी टीम लीडर और मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपके मेल को पढ़े। तो आपका कम्युनिकेशन शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और जिस मुद्दे पे आपको बात करनी है आप उसी पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो बहुत सारे फ्रेशर्स मिस कर जाते हैं कि किस तरह का अपीयरेंस होना चाहिए आपका। प्रोफेशनली अगर आप ऑफिस में काम करने जाते हो तो आपको कैसा दिखना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई 10,000 रुपये का ब्लेज़र खरीदना है, महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, नहीं। आपको अच्छे से 2-3 शर्ट्स लेनी है जो प्लेन है या जो भी है, बट वो ठीक से धुली हुई और आयरन होनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो कपड़े आपने कई तकिए के नीचे रखे हुए थे कई दिनों तक एंड वो क्रम्पल्ड है, क्योंकि क्रम्पल्ड अभी फैशन नहीं आया कॉर्पोरेट में। HR तो एटलीस्ट मानने को तैयार नहीं कि कोई क्रम्पल्ड कपड़े पहन के आ जाए तो वो फैशन है। ठीक है, आपको नीटली ड्रेस होके जाना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक लगता है आपको, लेकिन हमने देखा है कि कई फ्रेशर्स यहाँ पे मार खा जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने ये नोट करके रखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो पहले बात हुई थी किस चीज़ की, हमने बात करी थी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की। सेकंड हमने बात करी थी कम्युनिकेशन की। तीसरी हमने बात करी थी अपीयरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि जब आपको कोई काम दिया गया है तो हर इंसान से गलती हो सकती है काम में। अगर कभी गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे सुधारने का एश्योरेंस दीजिए कि मैं इसको सुधार दूंगा। लेकिन ये सब मत बोलना कि कंप्यूटर खराब हो गया था, प्रिंटर खराब हो गया था, या मेरी 7:30 चल रही है तो मेरे से गलती हो गई। नहीं, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट में नहीं चलती है। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियरली करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी ने टाइम दिया है और अगर आप वो डेडलाइन मिस करने वाले हो तो आप डेडलाइन से पहले ही जाके अपने टीम लीडर को बता दीजिए कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, किस वजह से लगेगा वो बता दीजिए, क्योंकि तब उनको आप पे भरोसा होगा कि आप रिलायबल हो। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि डेडलाइन पास हो गई और उसके बाद आप जाके बता रहे हो कि ये काम तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये परेशानी थी। तब वो होता है एक्सक्यूज कि आपने काम नहीं करा, तो आप उसका एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इसको फॉलो करें। लास्टली, ऑफिस के तरीके होते हैं, ऑफिस का एक एटिक्वेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस में जब आप नया नया ज्वाइन करोगे तो जहाँ एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके साथ बहुत उनकी गॉसिप चलते रहेगी। कोई किसी का फेवरेट रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई किसी और के बारे में बात करेगा। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। ना ही आपको ऑफिस में जाके पहले ही दिन से अपना गैंग बनाने की सोचना है कि मैं इसके साथ इसके साथ इसके साथ मिलकर गैंग बनाऊंगा। नहीं करना है आपको। अगर आपको पहले ही दिन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है व्हाट्सएप पे कि कौन किसका फेवरेट है, किसके खाने के डब्बे में ज़्यादा स्मेल आती है,
तो आप गलत व्हाट्सएप ग्रुप में घुस चुके हो, आपको वहाँ से निकलना है। पहले 6 महीने आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आप सबके साथ घुल मिल जाओ, सबको समझो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा है, आप जाके कोने में जाके किसी से बात करते हैं। तो प्लीज़ याद रखो, अगर आपने सीआईडी सीरियल देखा तो उसके हिसाब से सोचो कि कॉफ़ी मशीन के और दीवारों के भी कान होते हैं ऑफिस में। तो आपको केयरफुल रहना है कि आप इस झंझट में ना पड़ें, गॉसिप से दूर रहें और अपने काम से काम रखें, लोगों से दोस्ती बनाएं, हर एक से घुल मिल जाएं, बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 छोटी छोटी चीज़ें आपको किसी भी हाल में करनी है। छोटा सा सवाल, आपके नज़र में, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी फनी अनप्रोफेशनल चीज़ आपने देखी थी क्या, जो आपको आज सोच के हंसी आती है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उसको अगले वीडियो में फीचर करने की कोशिश करेंगे। या तो आपने कोई ऐसी गड़बड़ करी थी अपने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, तो लिखिए, क्योंकि कन्फेशन सोल के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप सूट पहन के जाएं, आईफोन हाथ में पकड़ के जाएं। नहीं, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें कि आप चाहे टाइम पे जाएं ऑफिस, आप ठीक ठाक कपड़े पहन के जाएं, आप अपने काम से काम रखें, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं टाइम पे करिए और ढंग से करिए, और फाइनली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप खरे उतरें और दूसरों को ट्रस्ट करके सबके साथ घुल मिलने की कोशिश करिए। ट्रस्ट करिए लोगों को ताकि वो आपको ट्रस्ट करें। ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप 80% फ्रेशर्स से आगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी फ्रेशर्स ये गलतियां हमेशा करते हैं अपने स्टार्टिंग करियर में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी और ऐसे वैल्यूएबल टिप्स देंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करिए कि जिसको लगता है कि ट्रैक पहन के जाना फॉर्मल वेयर है, क्योंकि एचआर तो ये नहीं मानता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है आपके लिए कंपनी में घुसने के लिए, लेकिन अगर आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा आपके एडिशनल और एक्स्ट्रा स्किल्स पे। डिग्री को आप सिर्फ स्टार्टर पैक मान के चलिए, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एडिशनल पैक्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सिर्फ स्टार्टर पैक के भरोसे रहते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। वेलकम टू पेप टॉक्स। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं, करियर सर्वाइवल स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो आज बात करते हैं कि एडिशनल स्किल्स एक्वायर करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और वो आप कैसे कर सकते हो बगैर अपनी जेब खाली करे और बगैर अपने वीकेंड बर्बाद करके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो टुडेज हार्श रियलिटी, आज की हकीकत ये है कि अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करके सोचते हो कि आप अपने बेसिक स्किल्स और क्वालिफिकेशन से ग्रो कर लोगे, तो मुश्किल है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में बेसिक जॉब करते हो और आपको लगता है कि आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लिया तो आप कंपनी में ग्रो कर लोगे। नहीं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी सिर्फ कीबोर्ड के सर्वाइवल स्किल्स होते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं और वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं अपने आप में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कोई भी एडिशनल स्किल्स एक्वायर नहीं करते हैं। मैंने देखा था एक टीम मेंबर को जो 3 साल से काम कर रहा था कंपनी में, और वो उसका काम काफ़ी बेसिक था कि एंट्री करना और कैंडिडेट के कॉल्स अटेंड करना, एंड वो उसी में खुश था। उसको लगता था कि उसके लिए डिग्री काफ़ी है
और जो वो काम कर रहा है ठीक है, उसके लिए अच्छा काम करेगा वो। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1-2 सालों में जब वो 3 साल का था इस कंपनी में, और जब मैंने ज्वाइन करा, मेरे सामने 2-3 लोग ऐसे आए उस टीम में जो उसके बाद आए, एडिशनल स्किल्स एक्वायर करे, प्रमोट हो गए और टीम लीडर बन गए, और ये उनका सीनियर होते हुए भी वहीं का वहीं रह गया। तो ये आज की हार्श रियलिटी है। अगर आप सोचते हो कि आपकी बेसिक स्किल्स और आपकी डिग्री काफ़ी है, तो आप गलत फहमी में हो, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी के लिए वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। मतलब कंपनी को ये लगता है कि अगर आप एक रिसोर्स को हायर करते हो और वो रिसोर्स बेसिक काम ही करता है, तो वो उसी के लिए ठीक है। बट अगर आप एडिशनल स्किल्स एक्वायर करते हो, दैट मीन्स आप और काम कर पाओगे, मतलब कंपनी के लिए और वैल्यू कर पाओगे, और फिर मतलब आपके लिए भी और ग्रोथ होगी कंपनी में। तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी उस कंपनी में दूसरे ऑपरेटर्स के मुकाबले। अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छे हो, और अगर आप प्रेजेंटेशन बना भी सकते हो और प्रेजेंट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये याद रखिए कि अगर आप कंपनी के लिए और वैल्यू दे सकते हो, तो कंपनी आपको रिटर्न में और वैल्यू देगी आपको। अब आप किस तरह के स्किल्स एक्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी फील्ड रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आपकी फील्ड में टेक्निकल स्किल्स क्या है, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो हो सकता है आपको नए नए टूल्स सीखने पड़ेंगे, आपको एडोबी सीखना पड़ेगा, आपको कोरल ड्रॉ सीखना पड़ेगा, आपको कैनवा सीखना पड़ेगा, आपको वेबसाइट्स बनानी सीखनी पड़ेंगी। अगर आप टेक्निकल लाइन में हो तो आपके एडिशनल कोर्सेज आपके फील्ड में आप एक्वायर करिए। और अगर आप डेटा में हो तो आप डेटा एनालिटिक्स करिए, डेटा इंटेलिजेंस करिए, बीआई करिए, जो आपके लिए एडिशनल इनपुट होंगे। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाने के लिए थोड़े एडिशनल स्किल्स आपको चाहिए रहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गए, फीडबैक कैसे देना चाहिए उस पर भी कोर्सेज होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। तीसरी बात, आपको ये भी सीखना चाहिए कि आपके सेक्टर में और आपके डिवीजन में, इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट चल रहा है। तो अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में एआई कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, आपको क्या सीखना चाहिए एआई में, जिससे आप आपका काम और अच्छे तरीके से कर सको। और अगर आप डेटा में हो तो आपको डेटा के रिलेटेड देखना पड़ेगा कि एआई पे क्या कर सकते हो आप, कि जो आपका काम आसान हो जाए और आपका काम बेटर हो। मतलब आपका टर्न अराउंड टाइम काम का कम हो जाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप जॉब करते हो तो आप कैसे टाइम निकालोगे ये ट्रेनिंग सीखने के लिए, और पैसे कैसे इसके लिए डाल पाओगे। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, काफ़ी वेबसाइट्स है और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो कई लोग फ्री में देते हैं। एक तो पॉइंट नंबर 1 है, काफ़ी लोग तो यूट्यूब में कोर्स डाल देते हैं, तो थोड़े स्किल्स तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अगर आप लिंक्डइन में हो तो लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लिंक्डइन में जाके सीख सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स हैं, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जो काफ़ी कम प्राइस पे आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो आप वो ढूंढ लीजिए और उन पे एनरोल कर लीजिए आपके फील्ड के लिए। अब बात आई पैसों की, तो पैसे तो आपको ज़्यादा लगेंगे नहीं, कई कोर्सेज तो फ्री हैं और वो हैं। अब आया टाइम की बात, तो अगर आप एक दिन वीकेंड पे बैठ के अगर आप 2-2 3-3 घंटे नेटफ्लिक्स और 4 घंटे 5 घंटे देख सकते हो, तो आप एक कोर्स के लिए हर दिन आधा घंटा क्यों नहीं निकाल सकते। सिर्फ आपको रिमोट को जो है रीडिंग मटेरियल से रिप्लेस करना है, ताकि ये आपके लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हर साल एक नया स्किल ऐड नहीं करोगे, तो अगले साल कोई और बंदा कम प्राइस पे और काफ़ी यंग बंदा आपको ओवरटेक करेगा और आपको रिप्लेस कर देगा। इससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा,
एआई यूज करने वाला आपकी जॉब छीन सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखो और अपनी फील्ड रिलेटेड स्किल्स ऐड करते रहो हर साल। मैं तो बोलता हूँ हर 6 महीने आपको एक नया स्किल ऐड करना चाहिए। तब जाके आप एक कदम आगे रहोगे, अपनी नौकरी में टिके भी रहोगे और ग्रोथ होने के चांस भी आपके अच्छे बनेंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर रहा है और आपको लगता है कि ये करना ज़रूरी है, तो कमेंट में लिखिए कि आप इस साल कौन सा नया स्किल ऐड करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट से किसी और को इंस्पिरेशन मिल जाए और वो भी ये कोर्स ज्वाइन करे। तो अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस वैल्यूबल थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ये मानता है कि डिग्री उसके लिए लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है, ताकि उसको पता लगे कि ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।